Hello everyone, welcome to Marathi reading and listening practice session. Today is a very auspicious day. As per Hindu calendar, it is Akshaya Tritiya, which is treated as one of the most auspicious days, 3.5 मुहूर्तांपैकी एक, one of the 3.5 auspicious days. Also, it is the Jayanti, that is birth anniversary of Lord Parshuram, and also the birth anniversary of Mahatma Basaveshwar. And coincidentally, this year even Ramzan Eid is getting celebrated today, and in few parts it was yesterday. So today I have selected the theme of Ramzan Eid. In the BBC Marathi website, there is an article about Ramzan Eid. So I am going to read that article so that you can see the text correctly and clearly. I have copied this article and then I will present it for you. Okay, please pause the video and try to read it, and then I will read it out for you. Okay, let me start. ईद उल फित्र म्हणजे काय? रमजान महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी ईद उल फित्र साजरी केली जाते. So first line means what is the meaning of ईद उल फित्र? In Hindi, ईद उल फित्र का मतलब क्या? So on the last day of Ramzan month, ईद उल फित्र is celebrated. So रमजान महीने के आखिरी दिन ईद उल फित्र सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है. रमजान महिना म्हणजे प्रार्थना आणि रोजा, उपवास करण्याचा महिना. So Ramzan is the month of prayer and fasting, which has special term roza. In Hindi, रमजान महीना मतलब प्रार्थना और रोजा करने का महीना. ईद उल फित्र याचं शब्दशः भाषांतर करायचं झाल्यास उपवास सोडताना साजरा केला जाणारा सण असं करता येऊ शकेल. So it's saying that भाषांतर करायचं झाल्यास, भाषांतर translation. So if at all you want to translate the word literally, शब्दशः means literally, then it can be translated as करता येऊ शकेल. It can be translated as उपवास सोडताना साजरा केला जाणारा सण. उपवास सोडणे means to break the fast. साजरा करणे celebrate. सण festival. So if you want to literally translate the word Eid ul Fitr, then you can translate it as a festival which is celebrated while breaking the fast. In Hindi, Eid ul Fitr का अगर हमें शब्दशः भाषांतर करना हो तो यह उपवास खत्म करते हुए मनाया जाने वाला एक त्योहार. रमजान महिना संपल्यानंतर पहिल्यांदा चंद्र दिसतो त्यावेळी रमजान ईद साजरी होते. So after or when Ramzan month ends and the first time the moon is seen, at that time Ramzan Eid is celebrated. In Hindi, रमजान महीना खत्म होने के बाद पहली बार जब चांद दिखता है तब रमजान ईद मनाई जाती है. भारतात हा सण 14 मे रोजी साजरा केला जाणार आहे. So in India, this festival is going to get celebrated on 14th May. In Hindi, भारत में यह त्योहार 14 मई के दिन मनाया जाएगा. ईद साजरी कशी करतात? हाउ इज ईद सेलिब्रेटेड? ईद कैसे मनाई जाती है? ईदच्या दिवशी मुस्लिम नवे कपडे घालून मशिदीत जातात. On the day of Eid, Muslim people wear new clothes and go to mosques. ईद के दिन मुस्लिम लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिद में जाते हैं. शीरखुर्मा सारखे गोड पदार्थ घरात बनवले जातात. गोड पदार्थ स्वीट. शीरखुर्मा is the name of specific dish. So the sweets like शीरखुर्मा are prepared at home. In Hindi,
शीर खुरमा जैसे मीठी चीज़ें घर में बनाई जाती है. ईदची नमाज अदा करण्यापूर्वी गरिबांना दान स्वरूपात काहीतरी देण्याची परंपरा आहे. So before offering the prayer at the Eid, prayer on the day of Eid, the namaz, there is a custom of donating something to poor. Parampara, custom. दान, donation. दान स्वरूपात, as a donation. In हिंदी, ईद की नमाज अदा करने के पहले गरीबों को दान के रूप में कुछ देने की परंपरा है. या दानाला जकात असं संबोधलं जातं. संबोधले जाणे means something is called as or something has term as. So this donation has term or is called as जकात. इस दान को जकात कहा जाता है. प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ती ही जकात देऊन नमाज पठण करण्यास जाते. So every Muslim person pays this zakat and then goes to read namaz or offer prayers. हर मुस्लिम व्यक्ति यह जकात देकर नमाज पढ़ने जाती है. नमाजानंतर परतताच मित्र आणि नातेवाईकांसोबत जेवणावर यथेच्छ ताव मारला जातो. परतणे means to return. परतताच means as soon as returning. So as soon as returning from namaz, मित्र आणि नातेवाईकांसोबत along with friends and relatives जेवणावर यथेच्छ ताव मारला जातो. यथेच्छ means it has two terms. यथा इच्छा means as per your will, and ताव मारणे means to devour something, eat as much as you can or eat very happily, finish something. When you like some particular food, you just keep eating and you eat a lot. So because of after whole day of fasting, it says that when breaking the fast, people enjoy their meal. So नमाज से वापिस आने के बाद दोस्त और रिश्तेदारों के साथ खाने का आस्वाद लिया जाता है. भरपेट आस्वाद लिया जाता है. एकमेकांना भेटवस्तू पैसे दिले जातात. भेटवस्तू गिफ्ट्स, पैसे, मनी. एकमेकांना टू ईच अदर. So gifts and money is given to each other. याला ईदी असं म्हटलं जातं. And this gift is called ईदी. So एक दूसरे को कुछ भेंट वस्तू दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं और इसे ईदी कहते हैं. जगभरातील अनेक देशांमध्ये ईदला सार्वजनिक सुट्टी असते. So in many countries in the world, Eid is declared as a public holiday, सार्वजनिक छुट्टी. सो दुनिया भर में अनेक देशों में ईद के दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है. एखाद्या व्यक्तीला ईदच्या शुभेच्छा द्यायच्या असल्यास त्यांना ईद मुबारक म्हणून शुभेच्छा दिल्या जातात. सो इफ यू वांट टू विश समवन ईद, then that term is called as Eid Mubarak. By saying Eid Mubarak, the wishes are conveyed. किसी व्यक्ति को ईद की शुभकामनाएं देनी हो तो उसने ईद मुबारक कह के शुभकामनाएं दी जाती है. Next part, please pause the video and try to read it. Okay, let me start. रमजान म्हणजे काय? What does Ramzan mean? रमजान हे एक अरेबिक नाव आहे. रमजान इज एन अरेबिक नेम. रमजान यह एक अरेबिक नाम है. इस्लामिक कॅलेंडर मधील 9व्या महिन्याला रमजान महिना म्हणून ओळखलं जातं. 9वा 9th महिना month. So 9th month of Islamic calendar is known as Ramzan. In हिंदी इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने को रमजान महीना कहकर बुलाया जाता है. रमजान महिन्यातच पवित्र कुराण या ग्रंथाची सुरुवातीची वचनं लिहिली गेली. सो इन द
Ramzan month itself, the Holy Quran and first stanzas of Holy Quran were written. अशी मुस्लिम धर्मियांमध्ये मान्यता आहे. It is believed among the Muslim religion followers or Muslims. In हिंदी, रमज़ान महीने में ही पवित्र कुरान ग्रंथ की पहली वचने या आयतें लिखी गई थी, ऐसे मुस्लिम धर्मियों में मान्यता है. त्यामुळेच या काळात कुराण पठण करण्यावर अधिक भर दिला जातो. भर दिला जाणे, इट मीन्स समथिंग इज गिवन इम्पॉर्टन्स. सो दैट्स वाय, त्यामुळेच, दैट्स वाय इन दिस पीरियड रीडिंग कुरान इज गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस. इन हिंदी, इसी वजह से इस दौरान कुरान पढ़ने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है. इस्लामिक कैलेंडर मध्ये 12 महीने आहेत. देर आर 12 मंथ्स इन इस्लामिक कैलेंडर. इन हिंदी, इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने हैं. ते लुनार कैलेंडर प्रमाणे चालतं. इट वर्क्स ॲज पर लुनार कैलेंडर. पाश्चिमात्य कॅलेंडरपेक्षा लुनार कॅलेंडरमध्ये 10 दिवस कमी असतात. पाश्चिमात्य, वेस्टर्न. So compared to Western calendar, lunar calendar has 10 days less. So पश्चिमी कैलेंडर के अपेक्षा लुनार कैलेंडर में 10 दिन कम होते हैं. त्यामुळे रमजान महिना दरवर्षीपेक्षा 10 दिवस लवकर येतो. So every year रमजान महीना comes 10 days early. इस वजह से रमजान महीना हर साल 10 दिन पहले आता है. रमजान काळातील दिनचर्या. सो द डेली रूटीन ड्यूरिंग द रमजान पीरियड. रमजान के दौरान की दिनचर्या. रमजान महिन्यात पहाटे सूर्य उगवण्याच्या आधीच जेवण केलं जातं. जेवण करणे मीन्स टू हॅव मील. सूर्य उगवणे, सनराइज. पहाट इज डॉन और डे ब्रेक. So in the Ramzan month, during the daybreak, before sunrise itself, meal is had. People have the meal before sunrise. In हिंदी, रमजान महीने में भोर सवेर सूरज उगने के पहले ही खाना खाया जाता है. यावेळी भरपेट आणि पौष्टिक जेवण केलं जातं. भरपेट मीन्स फुल स्टमक. Paustik is nutritious. So at this time, people have very nutritious meal and full meal. They eat till they are full. So इस दौरान भरपेट और पौष्टिक खाना खाया जाता है. याला सहरी किंवा सहूर असं म्हणतात. This is called सहरी और सहूर. हिंदी, इसे सहरी या सहूर कहते हैं. त्यानंतर सूर्यास्तानंतर जेवण करून रोजा सोडतात. सो आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर द सनसेट, द फास्ट इज ब्रोकन बाय हैविंग मील. उसके बाद सूर्यास्त के बाद खाना खाकर रोजा छोड़ते हैं या उपवास खत्म करते हैं. त्याला इफ्तार किंवा फितूर म्हटलं जातं. दॅट इज कॉल्ड इफ्तार और फितूर. याशिवाय रमजान महिन्यात तरावीह सुद्धा केली जाते. याशिवाय, अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द रमजान मंथ तरावीह इज ऑल्सो डन. इसके अलावा रमजान महीने में तरावी भी की जाती है. रात्रीच्या वेळी मशिदीत करण्यात येणाऱ्या प्रार्थनेला तरावीह असे संबोधतात. So the prayer that is done in the night time in the mosque is called तरावीह. So रात के समय मस्जिदों में की जाने वाली प्रार्थना को तरावीह कहते हैं. फक्त रमजान महिन्यातच तरावीह प्रार्थना केली जाते हे विशेष.
So it's special that it's only in Ramzan month Taraweeh prayer is carried out. सिर्फ रमज़ान महीने में ही तरावीह प्रार्थना की जाती है, यह विशेष बात है. So that's it for today's lesson. Thank you for watching this video. Please like it, subscribe to my channel and share it with your friends. Also, if you go to the channel, you will find a playlist of these sessions where you will find more than 40 videos so far, and I will be adding more and more lessons in coming days. So thank you once again. Please visit my website learnmarathivithkaushik.com and do give me your feedback, and we'll meet in next video. Bye.